By now, we've all heard of the Chawla rape case, the rape and murder case of a young 19-year-old girl who was picked up when she was returning home in the NCR region of the Chawla area, where three boys picked her up, they raped her, they brutalized her, they tore her, they put acid in her eyes, put screwdriver in her eyes, bottles in her vagina, and then killed her. This happened 10 years ago, even before the Nirbhaya murder case. But 2 months ago, no one had heard of it. In fact, we had caught up on We Women Want with her parents. Her father's a security guard. They'd been running from pillar to post, helped only by an NGO, trying to get justice. The lower courts had awarded that capital punishment to the three accused, as had the High Court. But the case was pending before the Supreme Court. When we spoke to the anguished parents, at that time they were telling me how they were running from the courts, getting dates, and the accused was striding in the courts, very confident and sure of themselves, and even threatening them while they were in the court. Well, a few days earlier, the Supreme Court did give the verdict, and it wasn't the verdict that everyone was hoping for. They actually freed the accused. Now the father has filed a review petition. The LG has given him the nod to do so. But the agony the father is facing, he has to take leave from work to go to the courts, helped by no one but just that one NGO. So we spoke to the NGO, we spoke to the fathers, we spoke to the parents. I'm going to play that show again this week. Fortunately, the case has finally made headlines. We all know now about the case as the Chawla rape and murder case, but at that time we were discussing it as the Kiran Negi case. He did give us permission to use her name. The anguish of the parents, the trouble they've gone through, and the freedom, which is why on the case, in my show, the father says कि मेरे को Telangana style, Hyderabad wala justice चाहिए. As you know, there the cops had, in an encounter case, the accused of a rape case were shot. Now, is this what, if the courts are not delivering justice on time, then do we blame him for asking that? Well, we're going to listen to his story because I'm going to be repeating that show this week again. Hello and welcome to We Women Want. This is a show where we discuss issues that pertain to women, we celebrate women achievers, we empathize with those who need our help, and we all get together and curate conversations where we can find solutions or at the best at least emerge as a support group for each other. Today, this week, we're going to be discussing an issue that is horrific, that everybody, hopefully nobody faces, but this is a problem. I would not even call it a problem. It's a bizarre, horrendous, brutal crime that takes place in our society. I'm talking about rape. Rape happens to young girls on the streets. It happens behind closed doors. We know there's marital rape. There's all kinds of abuse that women have to face. But the most horrific really is when your body is violated, when your sense of self is violated. We have a few case studies. We also have the Pari group, which is an NGO, volunteers from that group who will tell us from stories on ground. We have the founder of Pari, Yogita Bhayana, with us. And we also have Kuvar Singh ji and Maheshwari ji, parents of a young girl, Kiran Negi, who was raped. She was, her body was mutilated, acid was poured on her face, and finally she succumbed. She was picked up by some boys from within the colony as long as in 2012. So that's even earlier than the Nirbhaya case. But unfortunately, this case didn't get the media pressure, didn't make the headlines. The boys have been caught, but they still haven't been given the death penalty, even though they are in Tihar jail, they are incarcerated, but they haven't been given the death penalty. The cases is being dragging on, and so is the agony of the parents. We have the parents here to tell you firsthand what they are going through and have been going through, and will something that they can never ever undo or not go through. But at least can they get justice? Can they get empathy? Can they get sympathy? And can they get our support? Yogita, something that you've been doing, I believe our NGO has been working on this case. If you can just tell us a bit first about what your NGO does and then about this case in particular. So it's People Against Rapes in India, Pari. Pari was found after Nirbhaya only. It's a movement. It's not even an NGO we can call ourselves. We wanted to put it like a campaign mode, like an andolan, so that we reach out to masses and we together change things. So what we do is we support the victims. We try to handhold them for everything, whether it's their medical thing or FIR to their legal battle. I can't even say that we get them justice or we help them getting justice, but we are with them throughout their journey. We try to reach out to as many as possible, but as you said, I wish there were not many cases. There were not even a single case, but this is the reality right now. There are cases, so we try to reach out to them. Secondly, that's the biggest mandate. We need to prevent. We need to work on prevention. So awareness is the thing, and you can call it like a movement. We are spreading out all over India. We are going to the states, district level, panchayat level, doing awareness with boys and girls. Yes. Not only with girls, because boys
is equally important to reach out to the boys, and you'll be surprised that maximum of our volunteers are boys and men, 90%. So I think it's a very good start, and we have reached out to more than 10,000 people. 2 lakh people follow us. Otherwise, whenever there is a case, and we do a lot of awareness programs within the villages, within the district, within the administration, and this is what we are doing. And is it, can we say this is something that affects maybe low-income families more, or is it, and do you also have cases of marital abuse, marital rape coming to you? Yes, we do get. Unfortunately, they come from all strata of society. It is not only underprivileged section. It's just that, it is a difficult battle for the underprivileged one, because they don't have resources, they don't have knowledge. In fact, the women, those who go through marital rapes, in fact, even a domestic violence thing, she is conditioned to take it. Right. She is like, when I interact with them, I have interacted with this group a lot, many places I go, they are like conditioned that, okay, it is okay, this is part of my marriage, I'm okay with it. So you need to first decondition them, tell them, no, this is not okay, especially about the marital rape. I'm glad that you picked up this marital rape thing, because right now it is not even illegal. Yes, exactly. So I think we will get there soon, because I have that positive thing that we will get there soon, and it is a much deeper problem than anything else we really can relate to. And that happens, behind closed doors and people. day. But can you tell us a little bit about the case? Then Sure. I will ask them to. Sure. So when we were protesting for Nirbhaya and everybody was like reaching out to the family, we got to know about this case then. When I was at Jantar Mantar protesting, we got to know about their case. It had happened before Nirbhaya, I think 8 months before Nirbhaya, because it happened in February, that happened in December. So we got to know, we then tried to gather support for them also, and in the lower court, because of the Nirbhaya case pressure, even they got capital, the culprits of the Kiran Negi also got capital punishment in lower court and the high court very fast. But when it came to Supreme Court, even with Nirbhaya's mother, I had to struggle a lot. We had to go so many times, we had to apply so many times for the appeal, the appeal the culprit had put. So it was a struggle with them. So we started the same struggle together for them to put the appeals and all. Unfortunately, or you can say that that case got heard before, and that reached out to the logical conclusion, no matter after 9 years, because I will not call it a justice, but it reached to the logical conclusion. With them, I've been going personally, because he's working as a security guard, he doesn't even have resources, and not even highlighted, not got pro bono lawyers, free legal aids, like how people poured in for Nirbhaya. A lot of free lawyers wanted to help them because they wanted to get highlighted. But in this case, nobody wanted to help them. But then Pari Group supported, and we tried. Last hearing happened 3 months ago, and the judgment is reserved, but we have not heard. That also happened after 3 years of pursuance, lot of efforts and struggle, and I really salute them for their patience. Whenever I talk to them, first sentence is, फांसी कब हो रहा है? This is what he asked me. कौर जी, जो आपके साथ हुआ उसके बारे में हम क्या कहें, पर आप थोड़ा बता सकते हैं कि पिछले 10 साल 12 साल जो समय बीता है, 10 साल 12 साल जो भी है, ये किस तरह बीता है, ये शायद ही किसी पर घटे या किसी के साथ में ऐसा बीतना। 9 फरवरी 2012 से लेकर आज तक मैं मतलब जो है कि दर दर के धक्के खा रहा हूँ, दर दर के ठोकरे खा रहा हूँ। एक अकेले इंसान के लिए, मैं परिवार में मैं अकेला ये दौड़ने के लिए, बाहर से सपोर्ट युक्ता जी भी हैं, आप भी हैं, पब्लिक भी है, लेकिन वो दम नहीं है। और जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, जो रेपिस्ट केस के पीछे पब्लिक जागरूक नहीं होगी, तो रेपिस्ट रुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान इतना आज़ाद हो चुका है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये मुलजिम होते हैं, बलात्कारी होते हैं, इनको तो हैदराबाद वाला हिसाब किताब होना चाहिए कि शूट कर देना चाहिए, जहाँ मिले वहीं शूट कर देना चाहिए बस। हैदराबाद वाला हिसाब किताब was an encounter death. बिल्कुल, वो बहुत, one can't fault the मैं father कह रहा हूँ for asking हैदराबाद this. में जो पुलिस ने जो भी किया, जैसे भी हुआ है, वो सब बढ़िया हुआ है। चाहे सरकार कुछ कहे, दुनिया कुछ कहे, कोई भी कुछ कहे, लेकिन जो हुआ है उस ऐसे ही होना चाहिए, तभी ये बलात्कार रुकेगा। नहीं तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी जगह अगर बिल्कुल, हमें तो शांति में तो उस दिन मेरे को बहुत खुश हुआ कि मतलब इस तरह जगह वहाँ का
मैंने न्यूज़ सुना है कि मतलब वहाँ पे जो है कि उन्होंने वो एनकाउंटर हो गए, वो तो बहुत बढ़िया हुआ कि मतलब कम से कम उनके पेरेंट्स कोर्ट कचहरी को धक्के तो नहीं खा रहे हैं मेरी तरह। और रोज वो रिपीट हो रहा है और रेपिस्ट रुक नहीं रहे हैं। आपके केस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ, आप भी थोड़ा ऐड कि इनकी बेटी किरण नेगी, शी वाज अपने काम से वापस आ रही थी, गुड़गांव में ही रहते थे और गुड़गांव में जॉब करके आ रही थी, जॉब कर रही थी। आप यू बेटर दैट यू टेल। So she was working in Gurgaon, but she was coming home when there is a patch which is isolated. So she was walking from that patch to go to her family, and it was her second month of job, and she was very excited and getting salary home, and she was the only earning member then. And these goons, they saw her, abducted her, pulled her in the car. She was having another friend, she saved herself, but Kiran got into the car. They could manage to get her into the car, and then they took her to Rewari, tortured her, I mean, for hours. रेवाड़ी में तो पोस्टमार्टम हुआ है, बॉडी मिला था। वो रेवाड़ी से भी आगे 15-20 किलोमीटर आगे लेके चले गए। रेवाड़ी में ले गए थे, दे raped her, they inserted a broken bottle in her private parts, they poured acid on her face, she died, and when she asked for water, they जब पानी मांगा था उन्होंने उनको मटका फेंका उनके सर पे। मटका भर के सर में मार दिया, मतलब भरा हुआ मटका। तो जब आपको मिली, आपकी आखिरी बात हो सकती थी उनसे, आपको जिंदा नहीं मिली उसके बाद? हाँ, 3 दिन बाद तो डेड बॉडी मिली है सरसों के खेत में, मुझे कहाँ से जिंदा मिल जाएगी? और जब पोस्टमार्टम हुआ तो? जबकि गांव वाले ने अपने खेत में देखने गया था, तो मतलब घूमने गया था, तो तब उसको नज़र आई, तब उसने पुलिस को इन्फॉर्म करा, हरियाणा की पुलिस को, हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को। और अभी हमें बता भी रहे थे कुंवर जी कि जब जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था वो डॉक्टर भी बेहोश हो गई थी बॉडी को देख के, उनको भी आधे घंटे के बाद रिवाइव करके फिर हिम्मत आई उस बॉडी, उनकी बॉडी की पोस्टमार्टम करने का। सो दैट, महेश्वर जी मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, आप पिछले 12 साल कैसे गए हैं? क्या बताया मैं, 12 साल वैसे ही कटे, रोते रोते कट गए 12 साल। तो इंतज़ार करते कि अभी आएगी तभी आएगी, वो तो न्याय, तो हमें इंसाफ मिल रहा है। न्याय और इंसाफ, आप बिल्कुल फांसी चाहते हैं, उससे कम इंसाफ कुछ नहीं इंसाफ होगा। फांसी चाहिए, क्योंकि जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसको भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, उनको भी जीने का अधिकार नहीं है। वो तो थोड़ा हमारी योग्यता थी, हमारा साथ दे देते इसके। आज उनको छोड़ देंगे, कल किसी के और के साथ में करेंगे, तो फिर वो क्या फायदा उनका जीने का? जो रेपिस्ट है उनसे आप कोर्ट या कभी आपने उनको देखा है, क्यों किया, क्या एज ए बीन एनी दिस थिंग, उन्होंने कुछ माफ़ी मांगी है कुछ? नहीं, कोर्ट में, लोअर कोर्ट में मतलब दिखते थे, लेकिन वो उनके तो हौसले बुलंद होते थे। अच्छा, हाँ, लीगल सिस्टम वो अपने आप बिल्कुल, हाँ, बड़ी बड़ी आंखें, और मतलब जो है कि झटका मार के मतलब जो है कि चलना, इशारा करते थे कि जब हम बाहर आएंगे ना तुमको काटेंगे। हाँ। ऐसे बोलते थे। आपको धमकी देते हैं मतलब अभी भी? बिल्कुल नहीं, उस टाइम मतलब इवन आफ्टर दे वर कॉट दे वर लोअर कोर्ट आपको धमकी दे रहे थे? लोअर कोर्ट में तो मतलब कंटिन्यू, तो मतलब शर्मिंदा कुछ नहीं था? नहीं, अफसोस कुछ नहीं था। हाथ से करते थे कि काटेंगे, बोलते नहीं थे ना, तो इशारा करते थे, हम ऐसे बाहर इशारा करते थे, कैसे ऐसे काटेंगे। आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि केस मत। अब ये है कि आज मतलब डर ही है, आज मतलब कब वो साल में बाहर निकल जाए, कुछ उसका टाइम टेबल थोड़ी है। तो हमारे को क्या सिक्योरिटी मिली है? कोई सुरक्षा सिक्योरिटी तो कुछ मिली नहीं है सरकार की तरफ से, कि जो भाई मतलब जो है कि कोर्ट की तरफ से कुछ सिक्योरिटी तो मिली नहीं है, कि मतलब आज तो दहशत रहती है, कल मतलब जो है कि मतलब बाहर आ जाएंगे वो, तो मतलब हमें तो खतरा रहे। तो ये लड़के आपके मोहल्ले में रहते थे? मोहल्ले में रहते थे, लेकिन मोहल्ले में रहने का मतलब ये है कि मोहल्ले में तो ये मोहल्ला एक आदमी का नहीं होता, 2 आदमी का नहीं होता, मोहल्ला कितना बड़ा होता है। तो मोहल्ले में मतलब जो है कि इस तरह का घटना करें, इस तरह क्राइम करें, तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं समझना चाहती थी कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कुछ आपको बोला, माफी मांगी पेरेंट्स उनकी तरफ से? कुछ कोई बात ही नहीं है, तो उसी तरह भाग गए। हाँ, रात को ही भागे, जैसे पेरेंट्स तो रातों रात में अपना सामान, There were 2 real brothers involved. अच्छा, There were 2 real brothers. And they didn't know the family. They were from that area, but they had not known them. And they just vaguely abducted. They wanted to, because when they were drunk and all, everything was there in the evidence. And in Supreme Court, to our surprise, the lawyer of the opposition was claiming that they have reformed. I see. And the argument was done that they are reformed, so give them life
imprisonment. This was the last argument we went together. The lawyer from the other side was, because I could not even tell him in Hindi because his anger and anguish is very genuine because the arguments were in English. आप देखिए वो साउथ इंडियन ने क्या बोला वही बता रही थी। क्या बोल रहा था, क्या वही बताया इनको। बताओ ना। तो मतलब इस तरह का मतलब है, उसको नहीं बोलना चाहिए था। ये भाषा नहीं, चलो लड़ रहा हो ठीक है अपोजिट के साथ, लेकिन जो भाषा उसने करी है वो भाषा उसको नहीं करना चाहिए था। आपको भी पता है कि जी मैं वही बताने वाली थी कि दैट वाज told in English, but I wanted to avoid telling him because he was sitting next to me. We used to go for hearings together sometimes. So I could not resist. I told him what he is speaking. The lawyer of the accused, Mr. I'll tell his name also. So I think he ended up saying that they killed her, they brutalized her. At least they did not chop her. My God. So forgive them. This is the defense. This is the world that we are living in. Be grateful that. And this guy is practicing in India, in Supreme Court. And the court heard him. I hope the Yes, judge and pulled they him did up. not They did not pull him up. This is the conversation that we are living with, and how are we surprised that rape is happening in our societies, in our homes, in our colonies? I'm going to take a break and come back and talk a bit more on this. Hello and welcome back to We Women Want. Today is actually a very sad, bitter episode. We are discussing not just rape that is happening, we're talking to a family of a girl who had been raped. We're also talking to volunteers who worked on the ground, who've helped people, and the attitude that our law and order system really is not giving justice, is not helping, and that is the biggest disappointment really that is happening today. You were telling me about the case and the court. Again, this is what happens a long time. The boys are glorified and the girl is shamed. That's very happens. So this is the reason, you know, the mindset change is very important. That's the reason we chose to work on the mindset, because the mindset is the same in the courtroom also. Even the judges, I have no shame, and I can put it on record that even judges are very insensitive when it comes to cases like that. Not all, but almost all of them. Even the lawyers, and I mean, as public we feel ashamed, you know, what are we trying to do? I mean, they did not even get the support from the government because they were not highlighted. Is it only because media is there you will take a particular case to that level? How about other cases? And I really thank you for inviting them for discussion. It was very important that they should be heard because they never got free flat job offers and any other monetary compensation. They are still struggling. Or acknowledgement of their pain. That's more important. People want. He's still a security guard in a private school. So that's the agony. You have also volunteers here with us who आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि आपके पास माइक है कि आप किस तरह के केसेस आपके मिलते हैं? मैम हम अपने एरिया में काम करते हैं. हमारे पास रेप केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं. हम लोग जाते हैं, थाने में भी जाते हैं महिलाओं के साथ में. तो फर्स्ट पुलिस का तो रिएक्शन अच्छा नहीं होता है. वो तो पहले ही बोल देते किस लिए आए हो, क्या बात करनी है. तो पहले ही अगर हम लोग साथ में उनको हम अपना रेफरेंस दे दें कि हम लोग NGO से हैं या फिर महिला पावर से हैं, तो वो ठीक से बात करेंगे. अगर महिला खुद से जाएगी तो वो बोल देंगे बैठ जा, अभी कर देंगे. और आदमी लोग, औरत, ये नहीं कि विमेन ऑफिसर कोई रिस्पेक्ट नहीं मैम. लेडी कांस्टेबल भी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. और वो महिला तो अपनी एप्लीकेशन जमा करने से पहले वो अपने घर ही लौट जाती है इतना, क्योंकि वो वैसे ही डर जाते हैं थाने में जाने से. फिर उसके बाद हम लोगों को उठना पड़ता है उनके लिए. अगर हम अपना रेफरेंस देते हैं तो कहते हैं चली आते हैं फालतू में, हमारे यहाँ पर हमारा भी दिमाग ख़राब करने. फिर उनको अपने तरीके से समझाते हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनको केस ज़्यादा बनाने ही नहीं होते हैं. उनकी इमेज ख़राब होती है. अगर ज़्यादा केस उनके मोहल्ले में इतने आएंगे डोमेस्टिक के तो उनकी इमेज ख़राब होती है. क्योंकि उनसे भी फिर पूछा जाता है ना डिपार्टमेंट से कि आपके यहाँ इतने केसेस क्यों हैं. पुलिस की कोई मतलब कोई डर नहीं है या कुछ नहीं है. पुलिस तो उल्टा आरोपियों को हौसला देती है. वो ये This is so sad that police is actually supporting the perpetrators. पुलिस कोई सपोर्ट नहीं करती है. अभी हमारे यहाँ पर एक मेरी बहन के साथ ही एक केस हुआ है. अभी उसको ZTV हॉस्पिटल के अंदर ही उसको हाफ मर्डर करके डाल दिया. हॉस्पिटल के अंदर मैम, जहाँ पे इतनी पब्लिक होती है. और अभी वो वेंटिलेटर पर है.
माय गॉड। और कुछ पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं? कार्रवाई चल रही है मैम, लेकिन मतलब हमें लग नहीं रहा कि इतनी छोटी सी बात पर कोई इतना बड़ा कांड करेगा। She refused a boy or something happened. अच्छा, you know. तो वो लड़के ने फिर उनको जी, वो रेप करने की कोशिश थी, लेकिन रेप वो कर नहीं पाया था, वो तो खुद डर मारा। गया था, तो इसलिए उसने उसको गला काट दिया, उसकी हाथों की नसें काट दी हैं। और कोई बताना चाहेंगे लिटिल बिट? आप बताइए कि नहीं, सर ने बोला था कि उनको फांसी दे देनी चाहिए। फांसी नहीं मैम, उनको सज़ा भी नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्टली उनको पकड़ के बस शूट कर देना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सज़ा दिवाएंगे कुछ करेंगे तो 7 साल मिलती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि सब में बड़ी बात यही होती है कि बस उसको शूट करो, मार देना चाहिए। क्योंकि मैम बहुत केसेस होते हैं, क्योंकि भाई देखते हैं कि बहन बेटियाँ बहुत वो होती हैं, तो बस मेरा इतना ही। मतलब जस्टिस चाहिए, देयर इज अ नीड एंड देयर इज नो फेथ इन द लीगल सिस्टम और द पुलिस। दैट्स अनफॉर्चुनेटली द स्टोरी दैट इज कमिंग आउट। मैम लेकिन सर ने जैसे बताया, उनकी बेटी 2012 में उसके साथ ऐसा हुआ। 2012 से अभी इतना टाइम होने के बाद तो हमारी तो सरकारी फेलियर है। सबसे बड़ी बात तो सरकारी फेलियर है कि एक माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो कितने चक्कर उनके कोर्ट में लग जाते होंगे, और वो वैसे कमाने ही- वाले घर के अकेले। और अपना गम वैसे ही है, फिर कोर्ट का भी प्रॉब्लम सर पे लो बिफोर यू। और हर वक्त मैम टेंशन। मैं एक वकील हूँ और अच्छा। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे बैठ के डिफेंड करना सिस्टम को या बताना कि, लेकिन ये जो हैदराबाद किलिंग्स हैं या फिर जो भी सुमोटो ले लेते हैं, तो एक क्या होता है ना कि इसको रोक पाना एक टाइम के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आसपास सभी लोग फिर इसको जस्टिस एट देयर ओन हैंड्स एंड एट देयर ओन होम एट देयर ओन कन्वीनियंस करना शुरू कर सकते हैं। किस बात से किस बात, तो ये सोसाइटी में गन कंट्रोल और गन इसीलिए हमारे सोसाइटी में है। हाँ, हमारा लीगल सिस्टम और बहुत ज़्यादा, मतलब अभी जो रिसेंट बिल्किस बानो के साथ भी हुआ, तो वो तो आप इनका अभी पेंडिंग केस है, पेंडेंसी भी चलती है 30-30 साल तक, 40-40 साल तक। बट कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि अगर इनको कॉम्पनसेशन दिला दी जाए, या फिर इनका तो केस में कन्विक्शन हुआ है, लोअर कोर्ट से भी हुआ है, हाई कोर्ट से भी हुआ है, उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा या डेथ पेनल्टी में, इनको चाहिए कि डेथ पेनल्टी। एंड ऑफ कोर्स द लॉयर स्टेटमेंट इज atrocious. He should not have made a statement that at least And he should be barred. His name is Sirajuddin. I just found out. So I think these kind of people should be yeah. So these so I get your point, but the problem is that there is the frustration which is asking for. Nobody wants an encounter death, but the frustration with the legal system, the frustration of having to go to court, and the anguish that these guys are living while my daughter is dead. So one can see where they are coming from while one is not endorsing it. And we see that, and more sensitivity also is needed. Yes, more sensitivity is needed, and as I said, that it's very difficult to defend our legal system or how the police is. And yesterday while traveling, I got to know about so many stories, where the police sits on the evidence and the evidence expires. तो ये तो हम लोगों को we should discuss that also. Yeah, okay, tell us about that. So basically now we have so many cases from across India, and right now we are sitting in Delhi. It is easy for us to access any administration office for organization like ours. But when it is coming from India like Bihar and all, like yesterday I was on a call when Shakunji was there. So FSL samples are going to labs in 6 months, and there are no labs. And there are labs, but then they are overwhelmed with a lot of cases. So when this is a matter of 8-year-old girl who was brutally raped and killed. 8-year-old in Bihar, Banka district. So we are just trying to tell the administration to expedite. They are saying, what can we do? In the police station also, the IO was telling me, what can I do? I have sent the sample for for this thing. Evidence, but they are not giving me the reports. How will I file the charge sheet, or how will I make proceedings further? So it's very genuine. So the whole thing is so has so many gray areas that we need to address to everything to get to the logical conclusion within the time defined. Like as they are waiting for last 10 years for their justice. There should be a timeline, especially for cases like these, right, where the brutal rapes are concerned, and they should definitely make. But a lot of things happen on papers after Nirbhaya. Nothing on ground. Nothing on ground. That's a really sad and a very telling comment.
और कोई बात करना चाहेंगे, थोड़ा हमसे शेयर करना चाहेंगे? आप बताइए। आप मैम मेरा नाम तराना है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे सर ने बोला है कि हम केस जैसे कर रहे हैं तो आधी जान तो पुलिस वाले निकाल देते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे रिश्तेदार में मतलब लगते थे हमारे रिश्तेदार, तो उनका रेप हो गया था। तो वो लड़की रेप करने की, जिससे रेप हुआ वो केस करना चाहती थी, तो वो वहाँ गई, मतलब कि पुलिस वाले के पास गई। तो पुलिस वाले ने बोला कि इतने मतलब कि तुमसे इतने सवाल पूछे जाएंगे, इतने ये करे जाएंगे कि तुम केस करने के लिए, बताने के लिए ऐसे ऐसे सवाल वो हो, मतलब कि तो उन्होंने आधी जान तो उनकी निकाल दी। फिर माँ बाप कहने लगे कि हमें इतनी बदनामी सहना पड़ेगी, हम केस नहीं करेंगे। तो आधी जान पुलिस वालों ने निकाल दी, आधे घर वालों ने निकाल दी। फिर आखिरकार उस लड़की ने फांसी लगा ली। तो पुलिस वाले का मतलब कि मेरा कहना मतलब ये है, हमारी जो सरकार है मतलब कि पुलिस वाले जो हैं वो ठीक नहीं है यहाँ के। आधी जान वो ही निकाल देते हैं। लड़की कुछ कहने चाहे, करने चाहे, मतलब कि बस मेरा यही है। नहीं, एंड इट्स अ वैलिड पॉइंट, देयर इज़ नो हेल्प फ्रॉम द सिस्टम। पुलिस वाले खुद आपको डिसवेड कर रहे हैं कि आप मत फाइल करो। कोर्ट में जाएंगे तो लॉयर्स आपको सुन लिया क्या किस तरह की आर्गूमेंट दे रहे हैं। केस 2 कोर्ट से पास भी हो गया, डेथ सेंटेंस, लेकिन अटका हुआ है, 12 साल हो गए। हाउ मच मोर विल किरण नेगी's पेरेंट्स हैव टू वेट फॉर जस्टिस, फॉर सम काइंड ऑफ क्लोजर, बट मैक्सिमम इज एक्नॉलेजमेंट एंड जस्टिस। रियली कॉम्प्लीमेंट यू ऑन द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग एंड थैंक यू। हम आपके साथ रहेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आपका जस्टिस जरा जल्दी जितना भी कर सकते हैं इसको करने के लिए। आप बहन जी से पूछो, वो साउथ इंडियन 75-80 साल का मरने को तैयार हो रखा, वो मतलब अपनी बीमारी से कब मर जाए, अपनी मतलब सांस ही कब अटक जाए, लेकिन वर्ल्ड उसके कैसे थे कि मतलब वहाँ पे ये वहाँ पर ये रिपीट कर सकते हैं। बाकी तो पब्लिक थी, वकील भी थे, पब्लिक भी। But nobody objected to it. सवाल उसका नहीं था। Nobody objected to it. ये उसका वर्ल्ड नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। Sensitivity, understanding, empathy. You are doing your job. You're a lawyer, but at least be sensitive and understand. गुस्सा तो बहुत आया था कि बाहर आके जूते मारो इसके सर में, गंजे खोपड़ी में, लेकिन क्या करें, वो हो नहीं सकता था। This is the frustration. I think all of us together need to create a movement, need to create an awareness and need to do something so incidents like this are not repeated. But thank you all for taking part in this show. आप आए उसके लिए शुक्रिया, और जैसे मैंने कहा तो मैडम का है, हर समय हमारी मदद करती रहती है। Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.